हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। अगेन मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है एंड मेंस इज एक्सट्रीमली क्लोजर. So let us discuss another thing called MSP out there. This has been a question that's been asked here, question that's been regular intervals. What's that? That's called a which of the following is called a minimum price out. Which of the following are the problems that's been associated with the minimum support price? Called minimum support. तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या प्रॉब्लम है, वो हमें क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, दैट वी नीड इट्स लेट्स बिगिन दिस. सर आपको पता होगा कि एमएसपी आया क्यों? गिव यू अ लाइफ साइकिल फॉर एमएसपी. एग्जांपल ऑफ दिस एग्रीकल्चर फार्मर आउट फार्मर. ये पास एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दैट्स बीन विद दिस पर्सन दैट इट्स स्मॉल फार्मर आउट. अब सर ये स्मॉल फार्मर है, दैट इज फार्मर है. मान के चलते हैं इसकी प्रोड्यूस की इसकी इसकी प्रोड्यूस होगी तकरीबन, मान लेते हैं एग्जाम्पल हाइपोथेटिक, दैट्स 10 kg पोटैटो. 10 kg 10 kg टोमेटो. 10 kg का टोमेटो प्रोड्यूस पहला होगा वो लेके जाएगा. पहला कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा एपीएमसी मंडी. एपीएमसी मंडी दैट इज एग्रीकल्चर कमिटी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल ताजपुर मंडी. ताजपुर मंडी दिल्ली. वो लेके जा रहा है, ऑब्वियसली बात है वो लेके, ऑब्वियसली बात है कि वो के पास लेके मान के चल उसी को सेल करेगा, जो उसी को सेल करेगा जो इसको सबसे अच्छा दाम देगा मार्केटिंग. दैट इज T1 T2. अब सर ट्रेडर 1 है, ट्रेडर 2 है. मान लीजिए 1 किलो का पैसा, 1 किलो का पैसा दैट इज इन यहाँ पर आप बोलेंगे सर ट्रेडर ने एक ही बिड क्यों कर, ट्रेडर ने बिड क्यों कर, ये एक ही बिड कर, इसको कार्टलाइज कार्टलाइज. अब आप बोलेंगे कार्टलाइजेशन का मतलब एक ही मार्केट में एग्रीमेंट कर लिया है कि लोग एक ही प्राइस ऑफर करेंगे, भले उसको लेना हो ले, नहीं लेना हो ना. और ऑब्वियसली उस बेचारे के पास कार्टलाइजेशन अपने आप एक ड्रग एक आया है यहाँ पे. ठीक है सर, ये आया है ड्रग इकोनॉमी, कार्टल फॉर्म करते. अब आप बोलो इस ट्रेडर को लग रहा है यार तीनों ही कम दे रहे हैं, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग तीनों. ये क्या कर रहा है, ये ट्रेडर कह रहा है कि प्राइस बहुत, प्राइस लो, प्राइस
प्राइस कम है। अब इसका सिंपल सा फॉर्म है, इसका सिंपल सा तरीका है, 10 kg टोमेटो है, T1 T2, दैट्स एब्सोल्युटली दैट। अब बेचारा बहुत है सर, स्मॉल फार्मर, ये पहले मंडी में लेके आएगा अगर एब्सोल्यूट, और टोमेटो इवन सिर्फ पेरिशेबल गुड भी है, पेरिशेबल गुड भी एडजस्ट कर रही है। 10 kg टोमेटो, अब क्योंकि पेरिशेबल गुड और वापस लेके जाने कॉस्ट इतनी, वेयर हाउस गोदाम वगैरह है नहीं, सेल कर देगा, इनको सेल कर देगा, दैट्स नॉट आर्टलाइज कॉल्ड एज। leads to exploitation of leads to exploitation of farmers out there, T1 T2, और क्या है, दैट्स कॉल्ड 10। अब क्यों एक्सप्लोर, ताकि इन स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड मिनिमम। आप इससे क्या करेंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के, आप इसके, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन will come and will buy this out at MSP price, which will be at M price, which will be more than price as compared to what traders are offering, as compared to what traders, what traders, क्लियर है। तो भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे इंटर, ये अच्छी बात है, आप बोलेंगे ओके, दैट्स फाइन, दैट्स नथिंग बट वेलफेयर, वेलफेयर, नॉट पुलिस, स्टेट, protect the margin out there, the marginalized, that's means from the hands of exploitator is consumed। आपको पता चल गया कि एमएस, बट सर अपनी बहुत को समझने से पहले आपको ये समझ कि एमएसपी, अब आपको समझ है क्या थोड़ा बहुत उसकी, और कैलकुलेट कैसे हो, कैलकुलेट एमएसपी मिनिमम नोटिफाइड और 25 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करके करेंगे, बाद में प्रॉब्लम, बाद में अब यहाँ करके रेम्यूनरेटिव प्राइस आउट, FRP called fair remunerative price, that's 25 crops out there. Second point is
सेकंड पॉइंट इज आपने 25 क्रॉप बट एम कैलकुलेट एंड प्राइस सी है ये नोटिफाई करता है दैट इज समथिंग एग्रीकल्चर करता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन हो रही है किस बेसिस कैलकुलेशन क्या लागत कवर हो रही है दैट मीन्स द कॉस्ट इज कवर्ड और नॉट और इज इट टू हाई फॉर द मार्केट आउट हैपेंस कैलकुलेशन कैलकुलेशन दैट्स अब एमएस काम करता है कैसे काम करता है फार्मर फार्मर प्रोड्यूस प्रोड्यूस एपीएमसी एग्रीकल्चर एपीएमसी मंडी में लेके जाता है जैसे आज़ादपुर आज़ादपुर दैट इज आज़ादपुर मार्केट आउट अब वो आज़ादपुर मार्केट लेके गया अब वो आपको आज़ादपुर मार्केट लेके गया दैट मीन्स वहाँ उसको ट्रेडर मिलेंगे जो अगेन उसको एक्सप्लॉइट करेंगे कार्टेल फॉर्म कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा ऑपरेशन ऑफ दैट इज आउट will buy will buy this it will buy this produce at ms buy this produce at प्राइस पे सपोर्ट देंगे प्राइस पे खरीद लें बाय दिस एट एमएस अब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बफर होंगे अपने गोदाम वगैरह ये आगे स्टेट डिपोर्ट्स में यानी स्टेट डिपार्टमेंट्स ये स्टेट डिपोर्ट्स क्या करेंगे आगे ये सारा जो ग्रेन है विल सेंड टू व्हाट वी कॉल्ड एज अ फेयर प्राइस शॉप्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट
उनको ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्राइस पे 1 रुपये के चावल, एक कोर्स ग्रेन राशन कार्ड बनवाते हैं ताकि इस शॉप सामान मिले, इस प्राइस से हम ये चीज़, ये पूरी एमएसपी के थ्रू, ये साइकिल एमएसपी के थ्रू चलती है, ये आपको समझ। अब और चीज़ प्रॉब्लम से तो मैं जब जब मैं आप दैट सिंपल दैट सिंपली ये एक revenue expenditure out there called as very healthy appropriate क्योंकि रेवेन्यू एसेट्स और ना ही लाइबिलिटी, ना तो एसेट्स ना ही लाइबिलिटी, एसेट्स इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए रेवेन्यू because the 8th pay commission out there has been a salaries for the government employees out there. That's nothing but a revenue expenditure. If 8th pay commission, 8th pay commission is a part of revenue expenditure. 8th pay commission is a part of what we call revenue expenditure, and it's not creating any value addition, not creating value addition. Hope got this. I hope you that thing, but support given to the marginalized section of taxation. That support given to marginalized section of society through taxation. Through taxation. Now let us come to the how we calculate calculate calculation. Get the calculation. Calculate while calculating ACP cost and that's common agriculture.
this. Oh, एक reduce what we called as 10 kg to max. We called as 10 kg armor है. But he will incur what kind of first is a second the labor cost, what we call is putting a labor cost, and he's that's nothing color work, you color work body you because he needs study out. There is suppose this is there will be cost. Add this up. This will total cost. Total cost output. Total cost that's been associated with another part. Because government compensates. So A2. This is not but a recovery of and will add up. The cost is an imputed rental cost. What does that? Rent. Does own a land, but how about if he does? Then he, अगर उस कैलकुलेटिंग यार लैंड है तो बाय चांस मेरा अगर नहीं होता मुझे तो रेंटल इनकम दे ये C2 तो वो रेंट दे दो कवर करो कॉस्ट एड अप टू दैट पे मी फॉर दैट बट एट दिस C2 is calculated while that's been published by that. Okay, while calculating we'll only consider while calculating for the 25 crop that's been paid by the CACP of agriculture. That's clear. Certainly, that's certainly clear for you. Now the point is A2 plus FLS. That's just a cost recovery of a certain occupation of the need that premium. How will that? How are we gonna A2 plus 50% over plus 50%. A2
over 50%. That's how that is that's been offered to the free. Now, once we have done with the basics of out there, how it's being calculated, by that, what's the process? That's the that's the thing. Sir, great for the great for the second is by MSP distorts mark distort how MSP the what count functional. That's we that will farmers to buy or exploited by hands of out there who will get incentivized to produce, will encourage farmers to market will APMC encourage farmers which will which will under, under बाकी सब horticulture, which will apart from what we call as inflation, rise in rise in that is consumer that is rise in rise in completely clear with called consumer because it
what we called as leads to acting environment and my environmental. Which will practice practice of practice of that's called a mono. That's a, is for soil quality. Start growing then over it will disturb the NPK ratio of what we call. Once you will disturb that, one will reduce down called as a soil fertility. Once you will reduce down the soil fertility, will eventually practice of called as slash and burn. Slash burn. So you your forest to get more slash and burn. What what we call as a impact then and will impact and sense problem that benefit of this benefit as called of taken by benefit that's being hijacked by the large farm, hijacked by the large. Now let's of course grabbed by the large farm with this chart. Farmer out. Last mile last mile are not with as a result has to reduce out travel and reach. Logistic cost is talks what is logistic cost is advanced economy. So transportation right from to a middleman मिडलमैन में मिडलमैन से बेचते middleman buys that 10 kg for 1,000 rupees. Hypothetically, he buys that for 1,000. He's gonna sell this at MSP, take that produce mandi, sell that to guy at MSP at what? That's not profit of. And this middle big zameen
or a large farmer that can put that can put that transportation. That's complete. I hope that's completely clear with you. That's been associated with another issue that can be associated, not even a negative out there, but a lot of people says the policy out there. It's backed by law. It's policy out that is backed by law. By what's the major issue they want at this moment? But up that can be drawn at the will of a government. And we would it's that's what that's been passed from the that's the that's the another problem is leakages, what we call as corruption. Cooperate. Once FPI buys all the grains out of farmers, this will they will what we or sell their it and what Bangladesh. Bangladesh. Apart from higher salary, they will extract profit or extract profit. Okay, with you. Problems are once again outrage, taxation. You're utilizing too much taxation money, subsidies, for which you tax good roads, good airports, quality stuff. But you are so public outrage towards public outrage. इतना ज़्यादा point काटने
5 मार्क्स लिखना भी।